The middle ear extends much beyond the limits of the tympanic membrane. It forms a lateral boundary and is sometimes divided into mesotympanum, which is opposite to the pars tensa, epitympanum, which is above the pars tensa. It is also called the attic, and it is also medial to the shrapnous membrane and the bony lateral attic wall. उसके बाद है hypertympanum, which is behind the level of the pars tensa. अब हम pars tensa के एतबार से देख लेते हैं. The portion of the middle ear around the tympanic orifice of the eustachian tube is sometimes called the protympanum. अब हम बात करते हैं middle ear can be likened to a six-sided box, ठीक है, which has a roof, a floor, a medial, lateral, anterior and posterior walls. अब हम बात करते हैं roof की. तो it is formed by a thin plate of bone which is called the tegmen tympani. It also extends posteriorly to form the roof of the adytus and the roof of the antrum, and it is also called tegmen antri. It separates the tympanic cavity from the middle cranial fossa. Now for the floor. The floor is a thin plate of bone which separates the tympanic cavity from the jugular bulb. Sometimes it is congenitally deficient, and the jugular bulb may then project into the middle ear, separated from the cavity only by the mucosa. अब हम बात करते हैं anterior wall की. Anterior wall में आपने हमेशा याद रखनी है ये दो openings, ठीक है. It has a thin plate of bone which separates the cavity from the internal carotid artery. It also has two openings. अब हमारे पास है एक तो opening है for upper wali is for the tensor tympani muscle, and the lower opening is for the eustachian tube. Posterior wall is close to the mastoid ear cells, ठीक है. It has a bony projection which is called a pyramid. Through the summit of the pyramid there is TOS, which is called tendon of the stapedius, which is going to get attachment to the neck of the stapes. Then adytus, which is an opening through which attic communicates with the antrum. अब ये attic है और ये antrum है, ठीक है. They are in love and they are going to communicate with each other through the adytus. It is going to lie above the pyramid. अब एक pyramid है, उसके ऊपर जो है ना हमारे पास lie कर रहा है adytus, ठीक है, जो communication attic and antrum का. उसके बाद है कि facial nerve जो होती है वो posterior wall में run करती है behind the pyramid. Okay, so pyramid के बीच behind क्या है, facial nerve है. अब facial nerve जो होती है, facial recess जो होता है और the posterior sinus, it is a depression in the posterior wall which is lateral to the pyramid. अब basically क्या है कि facial recess एक posterior sinus होता है. It is bounded medially by the vertical part of the seventh nerve, laterally by the chorda tympani, above that by the fossa incudis. Surgically, facial recess is very important as a direct access can be made through this into the middle ear without disturbing the posterior canal wall or intact wall, canal wall. And it is also a route of insertion of the electrode of the cochlear implant. ठीक है, cochlear implant करें तो आपने क्या करना है, facial recess के through access देनी है. अब यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं. laterally chorda tympani है, medially हमारे पास seventh nerve है. ये हमारे पास pyramid नजर आ रहा है जो कि जिसका above वाला part fossa incudis के अंदर जा रहा है. ये हमारे पास साइनस tympani है जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे कुछ देर में. ऑलराइट, अच्छा, उसके बाद हमारे पास आती है मीडियल वॉल. अब जो भी चीज़ें ना जैसे लैब्रिंथ है, प्रोमोंटरी है, और इसके अलावा बेसिकली हमारे पास प्रोमोंटरी यहाँ पे 1 पे यहाँ नजर आ रही है, ठीक है, 1 पे प्रोमोंटरी है. अच्छा, तो बेसिकली जो प्रोमोंटरी है और जो विंडोज़ हमारे पास ओवल विंडो एंड राउंड विंडो, ये बेसिकली सारे यहाँ पे मीडियल वॉल के अंदर प्रेजेंट होते हैं. मीडियल वॉल ऑफ द मीडियल वॉल ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल. ओके, अच्छा, और उसके बाद हमारे पास है कि इट इज़ फॉर्म्ड बाय द लेब्रिंथ. मीडियल वॉल पे लेब्रिंथ है. इट हैज़ अ बल्ब विच इज़ कॉल्ड द प्रोमोंटरी. जो promontory होती है, it is due to the basal coil of the cochlea, the oval window into which the oval window भी होती है इसके अंदर जहाँ पर हमारे पास foot plate of stapes attached होती है. round window भी होता है जहाँ पर बेसिकली आपने बस ये बताना है कि यहाँ पे it is covered by the secondary tympanic membrane. It is also called the fenestra cochleae. Okay, above the oval window, अब ये एक mnemonic था कि ओवल विंडो के अबव हमारे पास एक कैनाल होता है जो कि फेशियल नर्व को अंदर आने देता है, ठीक है. और इसके अलावा फेशियल नर्व के ऊपर हमारे पास एक कैनाल होता है. इसके कैनाल के ऊपर हमारे पास एक कैनाल होता है जो कि सेमी सर्कुलर कैनाल्स को के लिए होता है, यानी कि अबव द ओवल विंडो इज अ कैनाल फॉर द फेशियल नर्व. एंड इस बोनी कवरिंग में समटाइम्स वी कंजेनिटली dehiscent एंड द नर्व मे लाई एक्सपोज मेकिंग इट वेरी वल्नरेबल टू इंजरीज और इन्फेक्शन. तो जो यहाँ पे हमारे पास फेशियल नर्व का कैनाल है ये बहुत वल्नरेबल है. और उसके अलावा ये कह रहे हैं कि above the canal of the facial nerve is the lateral semicircular canal. Just anterior to the oval window हमें क्या नज़र आ रहा है, बेसिकली एक hook like projection नज़र आ रही है which is called the processus cochlearii formis. इसकी जो medial wall होती है वो present करती है. अच्छा, यानी इसकी the tendon of the tensor tympani takes a turn here, यानी कि processus cochlearii formis वाली जगह पर in order to get attached to the upper part of the handle of Marius. The cochlearis formis process also marks the level of the first genu of the facial nerve, and it is an important landmark for surgery of this nerve. ये आपने important है याद रखना है. अच्छा, जो हमारे पास pyramid है उसके बारे में आप पढ़ेंगे कि जो medial to the pyramid there is a deep recess which is called sinus tympani. अब it is bounded above by the subiculum and below by the ponticulus. The lateral wall is formed largely by the tympanic membrane and to a lesser extent by the bony outer attic wall which is called the scutum. ये एक बहुत important है, MCQ है. Tympanic membrane is a semi-transparent. It forms a window into the middle ear. It is possible to see some structures of the middle ear through the normal tympanic membrane, for example, the long process of incus, the incudostapedial joint, and the round window. Mastoid antrum is a large air-containing space in the upper part of the mastoid, and it communicates with the adduct through the adytus.
Roof is formed by the tegmen antri. This is a continuation of the tegmen tympani and separates it from the middle cranial fossa. Lateral wall is formed by the suprameatal triangle. It is formed by a plate of bone which is on an average 1.5 cm thick. In adults, it is marked externally on the surface of the mastoid by the suprameatal triangle or the Mac-Evans triangle. The lateral wall of the antrum is very thin at birth, about 2 mm, and then increases in thickness at the rate of 1 mm per year till it is 12 to 15 mm in adults. Also remember that supramastoid crest is roughly going to correspond to the floor of the middle cranial fossa. अब हम बात करते हैं additus antrum की. Additus is an opening through which attic communicates with the antrum. Bony prominence of the horizontal canal is on the medial side, while the fossa incudus is on the lateral side. अच्छा उसके बाद into which the is going to attach the short process of incus laterally. अब जो fossa incudus है उसके laterally हमारे पास क्या attached होगा, incus का जो short process है वो. अब हम बात करते हैं mastoid and its air cell system. Mastoid consists of bony cortex with a honeycomb of air cells underneath. Depending on the development of the air cells, 3 types of mastoids have been described. एक तो cellular या well pneumatized होती है. Mastoid cells are well developed and intervening subtile thin. फिर आती है diploitic. इसमें हमारे पास होती है marrow spaces and a few air cells. फिर आती है sclerotic या फिर air cellular जिसमें there are no cells or bone marrow spaces. With any type of mastoid pneumatization, antrum is always present. In sclerotic mastoids या फिर acellular mastoids, antrum is usually small and sigmoid sinus is anteposed. Developing on the location, mastoid air cells are divided into zygomatic cells in the root of the zygoma, tegmen cells extending to the tegmen tympani and tegmen antri, perisinus cells overlying the sinus plate, retrofacial cells around the facial nerve, perilabyrinthine cells located above, below, and behind the labyrinth. Some of them pass through the arch of the superior semicircular canal. These cells may communicate with the petrous apex. अब यहाँ पे आपको पेट्रस एपेक्स के सेल्स नज़र आ जाते हैं और इसके अलावा आपको नज़र आता है सुपीरियर सेमीसर्कुलर कैनाल और इसके साथ बेसिकली पेरीलेब्रिन्थाइन सेल्स होते हैं, कम्युनिकेट करते हैं. फिर आ जाते हैं पेरीट्यूबल सेल्स अराउंड द यूस्टेकियन ट्यूब अलॉन्ग विद द हाइपोटिम्पैनिक सेल्स. दे आल्सो कम्युनिकेट विद द पेट्रस एपेक्स के साथ. और कौन कम्युनिकेट करता है? पेरीट्यूबुलर सेल्स अलॉन्ग विद पेरीलेब्रिन्थाइन सेल्स. उसके बाद हमारे पास आ जाता है टिप सेल्स विच आर क्वाइट लार्ज एंड लाइट, medial and lateral to the digastric ridge in the tip of the mastoid. फिर आ जाते हैं marginal cells which are lying behind the sinus plate and they extend into the occipital bone, and squamosal cells are in the squamous part of the temporal bones. In middle ear infections, abscesses may form in relation to these ear cells and may sometimes be located far from the mastoid region.